Hi, welcome to my channel Exceptional Excellence with Willys, and this is the English language series 17. In this video, we're going to learn the modals should, must, supposed to, and ought to, the uses of these four modals. First, we'll pick up should. Should का प्रयोग हम करते हैं to give advice, लोगों को सलाह देने के लिए, और टॉक अबाउट रूल्स, जो हमें अपने नौकरी के स्थान पर या कॉलेज में जो काम हमें करने चाहिए और या नहीं करने चाहिए, हम शुड का प्रयोग करते हैं। समाज में, घर पे भी जो हमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, हम शुड का ही प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शुड डू माई वर्क ऑन टाइम, मुझे अपना काम समय पर करना चाहिए। You should wear helmet while driving, आपको ड्राइविंग के समय हेलमेट पहनना चाहिए। We should honor our parents, हमें अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। They should abide by the rules, उन्हें नियमों के अनुसार रहना चाहिए। Like that, you can make many lines with should. And also do the 6 patterns and practice with 7 pronouns for fluency. The next word is must. Must is stronger than should, and we use it to talk about law or something which is compulsory or mandatory. करना ही है, अनिवार्यता बताना है, या हम कानून के बारे में बात करते हैं तब मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मस्ट हैज़ सम पनिशमेंट अटैच्ड और फाइन और सम पेनल्टी। वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, नहीं करेंगे वी विल एंड अप इनटू ट्रबल। हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना ही चाहिए और अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। दैट्स द मीनिंग वी कन्वे बाय यूजिंग मस्ट। वी मस्टंट, मस्ट वी, व्हाई मस्ट वी ओबे ट्रैफिक रूल्स? टू कीप आवरसेल्व्स सेफ। व्हाई मस्टंट वी ओबे ट्रैफिक रूल्स? हमें ट्रैफिक रूल्स क्यों नहीं पालन करना चाहिए? Third word is supposed to. Supposed is much polite than all of these, and also it is self-obligatory. Supposed to हमसे अपेक्षित है, हम खुद उसे करने के लिए इच्छुक या बाध्य हैं, तो हम supposed to का प्रयोग करते हैं। बहुत ही polite शब्द है। I am supposed to help my students in the college. I am supposed to finish my syllabus on time. मुझसे ये अपेक्षा की जाती है कि मुझे अपना सिलेबस समय पर पूरा करना चाहिए, मुझे अपने स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए। So all of these, in all of these lines, we can use supposed to, where it sometimes it might not be even a rule, but we feel obligated to do it. Like nobody has made a rule like that, but we do it by ourselves. The fourth word is ought to. Again, very polite, though not much in use these days. Very commonly used words are should, must, and even supposed to. But we can use ought to, very formal word. Same meaning in Hindi, करना चाहिए. We ought to obey our parents. We ought to respect our elders. हमें अपने पेरेंट्स का आज्ञा मानना चाहिए और हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ought to is very polite, बहुत ही polite शब्द है। I hope चारों शब्द आप सीख गए हैं, and इस वीडियो में इतना ही। Bye bye.